Hi friends, welcome back to my channels. In this video, I'm going to show you how to use max and min functions in ladder logics. So let's just start the video. Here, max and minimum functions are defined. The max and d0 and d0 is our first word value, and d0, d1, d2. d0 our source value, and d5 our destinations like results value, and k3 is a constant number of data register you want to extract. Like here d0 is source and k3 means number of finds here you want to search, like d0, d1, d2. In these three data registers, when I am putting any value, random value in d5, then d5 search in these three points d0, d1, d2, and find out the final results in d5s. Here you can see like d0 in 65, d5, and d1 86, and d82 60, like 65, 60, 65, 80. Max here you can see max value is 80. So d5 automatically extract highest max value. Now I'm going to change d1's at highest value, d, d2, no, d1. Like I'm putting 89s. So 89 will be reflected with d85s. Automatically change values, and here you can see like minimum instructions here used, and this d0, 1, 2. Among these three data registers, this minimum values in d0, d2. There, that's why here minimum d8 is our results value. Here we get minimum values. Like when I'm going to change minimum value like 60 to 58, so d8 will be reflected minimum value मीन्स जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू में d0 एंड d1 d2, और मैंने k3 कांस्टेंट डिफाइन की मीन्स ये 3 पॉइंट तक सर्च करेगा मैक्स वैल्यू, देन d0 d1 d2 एंड d5 में हमारे पास रिजल्ट शो करेगा। मैक्स जो भी d0 d1 d2 में मैक्स वैल्यू रहेगा वो उसको d5 में ट्रांसफर कर देगा। सेम टू सेम मिनिमम्स में जो भी आपने डाटा रजिस्टर का नंबर ऑफ पॉइंट्स किया है उसमें से d0 d1 और d2 में जो जिसमें भी मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू को डायरेक्टली d8 में ट्रांसफर कर देगी। d8 मीन्स आवर रिजल्ट्स डाटा रजिस्टर्स। थैंक यू गाइस।